5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, फैसला पढ़ रही है। Article 370, that Article 370 ceases to exist, is that the provisions of the Constitution which apply to every state in the first schedule would equally apply to the state of Jammu and Kashmir. Articles 371D and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 371D and Article 370 Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. Holding that the power under Article 370 Clause 3 cannot be exercised after the dissolution of the Constituent Assembly would lead to the freezing of the process of integration, contrary to the purpose of introducing the provision. And 5, if the contention of the petitioners on the interpretation of Article 370 vis-à-vis the dissolution of the Constituent Assembly is accepted, then Article 370 Clause 3 would become redundant and would lose its temporary character. The President, while deciding if the power under Article 370 Clause 3 must be exercised, determines if the special circumstances which warranted a special solution in the form of Article 370 have ceased to exist. This is a policy decision which completely falls within the realm of the executive. The court cannot sit and appeal over the decision of the President of India on whether the special circumstances which led to arrangement under Article 370 have ceased to exist. However, the decision is not beyond the scope of judicial review. It is settled law that the exercise of executive power can be challenged on the ground of malefides. The slew of constitutional orders issued by the President under Article 371D, applying various provisions of the Constitution and applying provisions with modification, indicate that over the course of the last 70 years, the Union and the state have, through a collaborative exercise, constitutionally integrated the state of Jammu and Kashmir with the Union. This is not a case where only Articles 1 and Article 370 of the Constitution were applied to the state of Jammu and Kashmir, and suddenly, after 70 years, the entire Constitution was being made applicable. The continuous exercise of power under Article 370 Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370 Clause 3 subsists. तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट 370 पर फैसला देने जा रहा है। कुछ ही देर में फैसला आएगा। 5 जजों की बेंच फैसला पढ़ रही है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। सीजीआई ने जजमेंट पढ़ना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। धारा 370 वैध है अवैध है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा फैसला आने वाला है। एलजी ने कहा है यह अफवाह है। पीडीपी का आरोप है महबूबा को नजरबंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने पर फैसला थोड़ी ही देर में आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जजमेंट पढ़ना शुरू कर दिया है। साथ ही पीडीपी ने आरोप लगाया है कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया है और एलजी ने इस पर बयान दिया है, कहा है कि यह बात अफवाह है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धारा 370 पर फैसला सुप्रीम कोर्ट पढ़ने जा रहा है। कुछ ही देर में फैसला आएगा। आपको बता दें सीजीआई ने जजमेंट पढ़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। केंद्र सरकार ने 370 खत्म की थी और उसके खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सभी याचिकों की एक साथ सुनवाई की। 16 दिनों तक ये सुनवाई चली। 5 सितंबर को सुनवाई खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया और आज इस पर फैसला आने जा रहा है। बड़ा फैसला होगा
370 वैध है अवैध है, और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर लगा देगा। The provisions of the Indian Constitution to the state would require amendments to the state constitution, because the purpose of the requirements of consultation and collaboration is for the smooth functioning of governance in the state and to ensure that the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir are not inconsistent with the provisions of the Constitution of India. Third, since the effect of applying all the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir, to Jammu and Kashmir through the exercise of the power under Article 371D is the same as issuing a notification under Article 370 Clause 3, which the President has the power to unilaterally issue, the principle of consultation and collaboration and not required to be followed. Fourth, the exercise of power is mala fide only if power was exercised with an intent to deceive. Deception can only be proved if the power which is otherwise unavailable to the authority or body is exercised, or if the power that is available is improperly exercised. Since the concurrence of the state government was not required for the exercise of power under Article 370(1)(d) to apply all provisions of the Constitution of the state, the President securing the concurrence of the Union of India on behalf of the state government is not mala fide. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that it is ultra vires Article 371D because it modifies Article 370. We have held that the modification by CO 272 to Article 367 as it applies to Jammu and Kashmir had the effect of amending Article 370 and is thus ultra vires Article 370(1)(d). We have reached this conclusion for the following reasons. First, recourse must be had to the procedure contemplated by Article 370 Clause 3 if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. No other procedure may be utilized to amend Article 370. Second, the rule of interpretation that a power under a statute must be exercised in accordance with the provisions of that statute and in no other manner is undoubtedly applicable to the Constitution. Third, from precedent, including Shankari Prasad Singh, Sajjan Singh, Kyoto Holohan, and Rajendra Shah, it emerges that the following aspects are of significance when assessing whether a change has been made to a provision of the Constitution. 1. A change may be either in terms of or in its effect. 2. A change can be said to have been made even if the language of the concerned provision is not directly amended by adding, subtracting, or modifying the language. This is a change in effect. And 3. If the effect of an amendment is to change a provision, such effect must be significant or appreciable. And 4. The substance of a change is more important than its form. Second, an assessment of whether a constitutional order amounts to a modification and consequently whether the procedure under Article 370 Clause 1 or under Article 370 Clause 3 ought to have been followed depends on this standard. Third, the effect of a provision of law is as important as its form. While the change sought to be made by paragraph 2 of CO 272 may appear to be a modification or amendment of Article 367 at first blush, its effect is to amend Article 370 itself. CO 272 changes the language to the proviso to Article 370 Clause 3 in two ways. First, it changes the recommending body from the Constituent Assembly to the Legislative Assembly. And second, it makes a new arrangement at variance with that specific Constituent Assembly. Both these changes are not insignificant because they modify the essential character of the proviso by substituting a particular type or kind body with another type or kind entirely. Fourth, while the interpretation clause, namely Article 367, can be used to define or give meaning to particular terms, it cannot be deployed to amend a provision by bypassing the specific procedure laid down for its amendment. This would defeat the purpose of having a procedure for making an amendment to the Constitution of India. Fifth, the consequence of permitting amendments through the circuitous manner would be disastrous. Many provisions of the Constitution would be susceptible to amendments which evade the procedure stipulated by Article 368 or other provisions. Sixth,
The previous constitutional orders, which modified Article 370 through Article 367, were clarificatory and consequential. They did not have the effect of amending Article 370. We have therefore held as ultra vires the amendments which were made to Article 370, Clause 3 by taking recourse to Article 367. G. The status of the Constitution of Jammu and Kashmir. The gaps left by the non-application of some parts of the Constitution of India were filled by the Constitution of the state. After the abrogation of Article 370, as it stood before the issuance of CO 272 and CO 273, and the application of the entirety of the Constitution of India to the state, the Constitution of the state does not fulfill any purpose or serve any function. Hence, the implicit but necessary consequence of the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir is that the Constitution of the state is inoperative. On the validity of Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3, this is what we have said. A five-judge bench of this court in Babulal Parate held that the views expressed by the legislature of the state under the proviso to Article 3 are not binding on Parliament. If the views of the state legislature were binding on Parliament, which is not the case, there would be scope for debate on whether Parliament, in exercise of its powers under Article 356(1)(b), could have substituted its views for the views of the Legislative Assembly of the state. However, the views of the legislature of the state are not binding on Parliament in terms of the first proviso to Article 3. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory to begin with. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 is valid and not mala fide. The next issue is on the validity of the suspension of the second proviso to Article 3 as applicable to Jammu and Kashmir. When the reorganization bill was introduced, that is on 5 August 2019, the second proviso to Article 3 as it applied to the state of Jammu and Kashmir ceased to exist because of CO 272. Thus, the issue of whether the second proviso to Article 3 could have been suspended in exercise of the power under Article 356(1)(c) does not survive. The next issue is the validity of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a union territory is temporary. The Solicitor General submitted that the status of the Union Territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. In view of the submission made by the Solicitor General that statehood will be restored of Jammu and Kashmir, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, धारा 370 को सुप्रीम कोर्ट ने वैध बताया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, केंद्र सरकार के 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रखते हुए कहा है कि यह वैध है, यह अस्थायी था। सीजीआई ने कहा है अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल की बात हो तब इसे चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 370 के फैसले को वैध बताया है। केंद्र सरकार ने इसे हटाया था, इस पर याचिकाएं लगाई गई थी और आज इस पर बड़ा फैसला आना था और अब केंद्र सरकार के धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दे दिया है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सीजीआई ने कहा है आर्टिकल 370 अस्थायी था, सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। आपको बता दें सीजीआई चंद्रचूड़ ने 5 जजों की बेंच का फैसला पढ़ते हुए कहा है आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसे केवल निश्चित समय के लिए लाया गया था। केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको बता दें इस मामले पर गहमा गहमी भी बढ़ती हुई दिखाई दी।
जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई। पीडीपी ने आरोप लगाया कि फैसले से पहले पुलिस ने उनकी नेता महबूबा मुफ्ती को गैरकानूनी तरीके से नजरबंद कर दिया। इसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसी को नजरबंद न करने से इंकार करते हुए कहा है ऐसी खबरों अफवाह है, खबरों को अफवाह बताया है, अफवाह फैलाने की कोशिश करार दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने 370 को हटाया था उस फैसले को बरकरार रखा है और सीजीआई चंद्रचूड़ ने 5 जजों की बेंच का फैसला पढ़ते हुए कहा है आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसे निश्चित समय के लिए ही लाया गया था। केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही सीजीआई ने कहा कि अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। सीजीआई ने यह भी कहा है इस फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं। एक फैसला मेरा, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है, दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा है आर्टिकल 370 अस्थायी था, सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। सीजीआई ने बड़ी बात कही है, आपको बता रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने 5 जजों की बेंच का फैसला पढ़ा है और फैसले को बरकरार रखा है। आपको बता दें केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने बड़ी बयान दिए हैं, बड़ी बातें जो कोर्ट ने कही है वो आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा। तो कोर्ट में जो बड़ी बातें निकल कर आई, कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही आपको बता दें। सीजीआई चंद्रचूड़ ने 5 जजों की बेंच का फैसला पढ़ा है और कहा है केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। बड़ी बातें कोर्ट ने कही है, आपको बता रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही है तभी उसको चुनौती दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार रखा है कोर्ट ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर फैसला बरकरार रखा है। केंद्र के धारा 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। कुछ बड़ी बातें भी कोर्ट ने कही। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गहमा गहमी भी बढ़ती हुई दिखाई दी। और इसके साथ ही बड़ी बातें निकल कर आ रही कि जम्मू कश्मीर में 2024 में चुनाव भी होंगे। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने बड़ी बातें कही है। साथ ही यह जानकारी भी निकल कर आ रही कि अब 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे। सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दे सकते, बड़ी बातें कोर्ट ने कही हैं। आपको बता दें 370 पर यह बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। लगातार 23 याचिकाएं लगाई गई थी 370 के खिलाफ। केंद्र सरकार ने 370 को हटाया था और उसके बाद याचिकाओं पर 16 दिन तक सुनवाई हुई और अब 16 दिन की सुनवाई के बाद बड़ा फैसला यह सुप्रीम कोर्ट का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।